Good morning, all of you. Today we have starts our next essay. Experiment number 10, essay of zinc oxide. This essay is also based on the acid-base back titration method. Last two experiments, assay of sodium bicarbonate and assay of boric acid, that also acid-base type of titrations. In the assay of sodium bicarbonate, neutralization reaction is occurs and that acid depends on that neutralization reaction. Acid-base type of titration method we are performing. Second assay, assay of boric acid. That boric acid is slightly soluble in water and very weak acid. So we are not performing it directly titrated against the standardized alkali. बहुत कमजोर एसिड होने की वजह से वो तुरंत उसका रिएक्शन हो जाना है एसिड के साथ में और हमें रिजल्ट्स एक्यूरेटली नहीं मिले. सो व्हाट वी आर डूइंग that boric acids we are dissolved in a glycerin and forming a monobasic acid, that glyceroborax complex, which is 10,000 times more strong than boric acid. And then we are successfully titrated against standardized sodium hydroxide. Now, assay of zinc oxide, that is also we are performed by using the same method, acid-base titration. But there is a little bit different here. Just I am saying to you that acid-base back titration method. Back titration means यहाँ हम कुछ उल्टा करने वाले हैं. अब वो क्यों करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं? That's we see first. Zinc oxide, if we are reacted with acid, it reacts very slowly. So it takes a lot of time to complete the reaction. So what we are doing? We are added excess of acid. जितना एसिड उसके साथ रिएक्ट होने के लिए लगता है उससे ज्यादा एसिड हम डालते हैं. When zinc oxide slowly reacts. So what we are doing? Excess of acid added. A fixed amount of acid we are added, but that's an excess to react with the zinc. जिंक के साथ रिएक्ट होने के लिए जितना लगने वाला है एसिड उससे ज्यादा क्वांटिटी हम उसमें डाल देते हैं. The volume of that acid that we know, definite amount of acid we are adding, and that zinc oxide and acids react together. अब वो ज्यादा डाला है हमने तो क्या होगा? That excess of acid were added, so that unused acid is remaining in that conical flask. अब जो नहीं लगा, जिंक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट नहीं हुआ, वो जो एसिड है, that's we are find out how much amount of acid is remaining. यानी उसमें कितना बचा हुआ है ये हम पता लगाते हैं और फिर उसी के ऊपर से हमें कितना एसिड लगा जिंक ऑक्साइड के साथ में, दैट्स वी आर फाइंडिंग. एंड फ्रॉम दैट वी आर कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक ऑक्साइड. तो ये सीधा ना खाते हुए थोड़ा गोल घुमा के हम खाते हैं. अब यहाँ पर जो है ये रिएक्शन से बोर्ड के ऊपर है. Involved in that acid, zinc oxide plus H2SO4, that's where added excess
that produces zinc sulfate and water. So that zinc is completely utilized. But water with a small amount of acid is remaining. That's we are reacted with sodium atoms. And that produces sodium sulfate. Now, how much amount of sodium hydroxide reacted with sulfuric acid? That's mean हमें इसका रीडिंग मिलेगी. That's reading we are getting. So exact कितना अमाउंट हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ, दैट्स वी आर फाइंडिंग. And from which how much amount of sulfuric acid is remaining, that's we are calculated. अब जो हमने लिया, suppose we are taken excess of acid, that's 50 ml लिया, so that 50 ml is not required to react with this zinc oxide. Whatever 20, 25, 15, 40 जो भी लगा होगा वो लगेगा, और इसमें से भी बचा हुआ 10, 15, 25 ml जो भी होगा वो दैट्स रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी हमें पता है, एग्जैक्ट मोलैरिटी हमें पता है. सो फ्रॉम दैट we will find out how much amount of sulfuric acid is required to react with zinc oxide. अब सपोज ये हमारा कैलकुलेशंस के बाद में आया कि ये 25 ml बचा हुआ है, 25 ml माइनस करते हैं 50 ml में से, तो उतना उसके साथ लिया. ये सिंपल तरीका है. और फिर उसी के साथ हम निकालते हैं कि भाई 25 ml लगा हुआ है, तो 25 ml जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा, तो एग्जैक्ट परसेंटेज प्योरिटी यूजिंग दैट फैक्टर वी आर टेकिंग. दिस वन फैक्टर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड दिस सेकंड फैक्टर फॉर एसिड. So with the help of this assay we are calculated as our previous calculation. अब यहाँ पर आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन टाइट्रेशंस परफॉर्म करना. फर्स्ट वन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपने लास्ट टाइम किया था. we are titrated against standardized potassium hydrogen thalate, and from that we are calculated the molarity of sodium hydroxide. तो आपने ये बोरिक एसिड के एसिड में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड किया हुआ, तो वो आपको यहाँ परफॉर्म करना है. Then we are perform two titrations with sulfuric acid. First one line titration and second one back titration. A back titration that's we are perform along with zinc oxide plus sulfuric acid and mixture were taken and titrated against sodium hydroxide solution. So what happened? That unused, unreacted sodium sulfuric acid that's were reacted with sodium hydroxide. तो वो जो क्लिनिकल फ्लास्क in this conical flask, first we have taken zinc oxide and sulfuric acid, that's we are mixed. We have taken the excess amount of sulfuric acid, हमने इसमें excess amount of sulfuric acid लिया, तो इसमें थोड़ा सा अमाउंट जो है वो अनयूज है, हमें ये पता नहीं कितना है. हमने 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला है. अब जिंक ऑक्साइड हमने लिया था, उसके साथ में कितना रिएक्ट हुआ ये पता नहीं, लेकिन जो अनयूज सल्फ्यूरिक एसिड इसमें बचा हुआ है, दैट्स वी आर रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये हमारा पहला टाइट्रेशन, दैट्स वी आर सेइंग द बैक टाइट्रेशन. Now, whatever the reading we are getting, that is just for that unused sulfuric acid.
अब इसमें के लिए जो हमारा प्यूरिट रीडिंग आने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो कितने अमाउंट के लिए आएगा? तो सिर्फ जो छोटा सा अमाउंट, अनयूज अमाउंट है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसके साथ रिएक्ट हुआ है, उतना ही। So that's our first reading of assay, back titration. And same thing we are doing. Now we are perform again blind titration. इसमें अब हमने सिर्फ क्या लिया? 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड लिया, बाकी उसके अंदर जिंक ऑक्साइड नहीं डाला। We are added indicator as it is, we are added other reagent as it is, जो भी है वो सारे हमने डाल दिए। अमोनियम क्लोराइड भी इसमें डाला हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला हुआ है और इंडिकेटर भी हमने डाल दिया उसमें, मिथिल ऑरेंज, और फिर उसको टाइट्रेट किया। अब इसमें जिंक ऑक्साइड नहीं है, सो वी आर सेइंग दैट अ ब्लैंक टाइट्रेशन। फर्स्ट वी आर परफॉर्म बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन in which zinc oxide plus sulfuric acid plus ammonium chloride plus indicator which is orange we are adding। तो इसमें जो ये अनयूज है, दैट्स वी आर रिएक्टेड विद इरिंग, so we are getting particularly small readings, less amount of sodium hydroxide is required as compared to the blank titration। अब blank titration जो हमारा दूसरा है, हम जो परफॉर्म करने वाले हैं, सेकंड वन, blank titration, so in which we are not added zinc oxide, we are taken sulfuric acid, ammonium chloride and methyl orange, again titrated sodium hydroxide। अब यहाँ पर पूरा 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसके लिए कितना अमाउंट लगा, दैट्स वी आर फाइंडिंग। देन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विद द कंप्लीट अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स वी आर गेटिंग, सो दैट्स वी आर सीइंग द ब्लैंक रीडिंग। अब हमारे पास में दो रीडिंग हो गए, बैक टाइट्रेशन का एंड ब्लैंक टाइट्रेशन, दो रीडिंग आ गई। अब इस रीडिंग में से अगर हमने ये रीडिंग को माइनस किया, सपोज व्हाट विल बी दैट वी आर टेकन 20, हियर वी आर गेटिंग 50, so what we are saying, 50 minus 20 is equal to 30, so 30 ml of sulfuric acid that's reacted in back titrations, what will be the amount of zinc oxide present? आगे आपके समझ में, by that way we are calculate how much amount of sulfuric acid required to react with zinc oxide, and from that we are calculate the percentage purity of zinc oxide. So that is the simple principle involving in the assay of zinc oxide। ये जिंक ऑक्साइड का सिंपल थ्योरी है, सिंपल प्रोसीजर। So according to that, what we are saying, that assay of zinc oxide is based upon the acid base type of titration, back titration method। Zinc oxide reacts very slowly, so in which we are added excess of definite amount of sulfuric acid which will be capable to react with zinc oxide, and that unused excess of sulfuric acid we are titrated against standardized solution of sodium hydroxide। That sulfuric acid solution which is excess, that we are back titrated from the volume of sulfuric acid consumed, percentage of zinc oxide can be calculated। ये सिंपल मेथड है।
theory है, principle है. This reaction is involving in the assay of zinc oxide. Zinc oxide plus excess of sulfuric acid, definite amount were taken, and that unused sulfuric acids were titrated against standardized sodium hydroxide. We are getting the reading. That's we are seeing the back titration reading. Then we are perform blank titration. Only the definite amount of sulfuric acid, those were added here, that taken without zinc oxide and titrated against with all that reagents, sulfuric acid, ammonium chloride, methyl orange, we are taken and titrated. So whatever that reading we are getting, that's we are saying the blank titration. So that difference says us to that amount of sulfuric acid reacted with zinc oxide, and we are particularly that a different amount. What will be the difference between the blind titration reading and back titration reading? That is, we are used for the calculation of percentage purity of zinc oxide. ये सिंपल प्रोसीजर. अब यहाँ पर आपको 3 टाइट्रेशन परफॉर्म करना है, इतना याद. That's the simple theory of assay of zinc oxide. Now, whatever be the readings we are getting, from that we are calculating the percentage purity. Suppose what is the reading of our previous experiment? कितना रीडिंग था हमारा, जो भी आया होगा वो 23.2 ml. That's we are taken here. ये हो गया, आपके समझ में आ गया. Then we are now wind up this reaction. Just clean that plywood, and now we are just divert on the titrations and readings. Titration number 1, standardization of sodium hydroxide. In conical flask, we are added, लेकर आता है 5 grams of potassium hydrogen talate plus we are added 75 ml water plus we are added indicator, that is phenol. And titrated from urate we are added standardized solution of sodium hydroxide. अब जितना अमाउंट हमें लगने वाला है, that's we are seeing the urate reading for standardization. पिछले टाइम जो रीडिंग था वही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं 23.2. That's our first titration. Now second titration we are perform for assay. In assay, first we are perform blank titration.
Now, in conical class, what we are added? इसमें हमें क्या डालना है? Zinc oxide. We are added 1.5 gram of zinc oxide plus 50 ml H2SO4 plus 2.5 gram of ammonium chloride plus methyl orange as an indicator. So that's excess of sulfuric acid हुए आते हैं. अब 1.5 ग्राम के लिए 50 ml नहीं लगने वाला, तो कम लगता है. तो ये रिएक्ट होगा पहले जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड आपके केमिकल क्लास में. We are check well, and then whatever be that excess and unused of sulfuric acid remaining here, that's what I'm writing with standardized सोडियम हाइड्रोक्साइड. हमारा स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है. अब स्टैंडर्डाइज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके साथ हम इसको टाइट्रेट करें. अब ये जो एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट्स रिएक्टेड, and whatever be the readings that we are getting, that we are seeing the current reading for back titration. Suppose it will be 24 L. Now 24 L. So that's 24 ml of zinc oxide sodium hydroxide we are added, and that's reacted with this excess of sulfuric acid. अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो गया, हमें मिला इसमें सोडियम सल्फेट एंड वाटर फॉर्म. That reaction was completed and indicated by change in color by indicated those were added methyl orange. तो हम इसमें डालें. अब ये हो गया आपका सेकंड रीडिंग. नाउ वी आर परफॉर्म ब्लाइंड टाइट्रेशन. Blind titration, in which we have not added zinc oxide. We have taken 50 ml of sulfuric acid as it is, 2.5 gram of ammonium chloride as it is, methyl orange we are added as an indicator. And this 50 ml sulfuric acid now react. The end point we are getting when the reaction is completed, the change in color we are getting from that indicator by particularly red to yellow, and whatever that reading we are getting, that we are saying the reading of blind titration. Suppose that comes 58.28, great reading for blind titration. 58.28. That three readings we are getting from three titration. First one we have performed the standardization of sodium hydroxide. So we are getting this reading for standardization. This reading we are used for calculation of exact molarity of sodium hydroxide. Now, for assay we have performed first back titration, in which we are added zinc oxide
plus 50 ml of sulfuric acid, which is excess. Then added 2.5 grams of ammonium chloride and few drops of methyl orange as an indicator. Then titrated against this. So what will be that reading we are getting for that? That's 20. इसमें जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा पहले, और जो अनयूज है सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस है वो रिएक्ट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो छोटा अमाउंट, कम अमाउंट जो है सल्फ्यूरिक एसिड का वो रिएक्ट जो बचा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो हमें रीडिंग जो भी मिलेगा वो थोड़ा कम आएगा ब्लैक टाइट्रेशन। एंड थर्ड रीडिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम ब्लैक टाइट्रेशन in which we are not added zinc oxide, exact how much amount of sulfuric acid we are taken, that's we are titrated, and again added 2.5 grams of ammonium chloride and methyl orange as an indicator, and then what will be that readings we are getting, that's we are saying the blank reading, that is 58.8. These three readings we are getting, and from these two readings, we are calculate exact how much amount of sulfuric acid is reacted with zinc oxide. Blank reading, blank urate reading minus back titrations urate reading. So what will be that? H7 we are seeing that's reacted with zinc oxide. So 58.2 ml minus 24.0 ml. So what will be that answer? That's particularly we are saying 34.12. So 34.2 ml of sulfuric acid requires to react with zinc oxide. So the value of our X, that is 34.8. So when we are calculate the percentage purity of zinc oxide, we have taken the difference of these blank titration and blank titration reading, that is the X. Okay, all of you understood? Then we will start calculations. Thank you.